The guns have fallen silent after 4 days of raging military conflict between India and Pakistan that threatened to spiral out of control. The ceasefire in place, though, is far from permanent or open to misuse by Pakistan. Pakistan remains on edge, with India putting in place strong warnings and conditions, setting a new normal in the relationship. Here's more. Bruised and battered by Indian military forces, Pakistan was forced into crying peace. It had unleashed drone and missile fire after India's Operation Sindoor ripped into terror camps on its soil and paid the price for it. Military hostilities have ceased, but India has tightened screws on Pakistan-backed terror to the hilt. सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। Prime Minister Modi spelled out a new blueprint and paradigm for all India's dealings with Pakistan to come. 1. India will not stand any nuclear blackmail and would give a strong reply. 2. India would not differentiate between terrorists and the government that supports them. 3. Talks with Pakistan would only be held on the issues of terror and Pakistan-occupied Kashmir, nothing else. And 4. Terror and talks cannot go together. Terror and trade cannot go together, like the symbolism that blood and water cannot flow together in the Indus. निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। India's Director General Military Operations and his counterparts in the Army, Navy and Air Force have given out minute details of Operation Sindoor and the operations that followed. From elimination of over 100 terrorists in 9 terror hubs inside Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, to Indian action against 11 key Pakistani military sites and air bases in Islamabad, Karachi and Sialkot, all of them deep inside Pakistani territory. Indian Navy remains deployed at sea in a credible deterrent posture to respond decisively to any inimical action by Pakistan or Pakistan-based terrorists. There's proof of Indian forces destroying Chinese PL-15 missiles. Numerous Yihar drones of Turkish origin were shot down, with evidence presented of their destruction. India's indigenously produced defense system Akash Tir made a huge mark.
India's warning to Pakistan for the road ahead is loud and clear. हम घर में घुसकर मारेंगे. It has boiled down in the end to what the Indian scriptures laid down as peace being dependent on a show of might. आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे. तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत. तो समझदार के लिए इशारा ही काफी.